Yeah, guys, we will start at 3. By the time, if you have any questions, you can ask the questions or doubts. Any doubts in the previous class? Is my screen visible? Guys, my screen is visible to you or not? Am I audible? Someone please speak. अरे बेटा, मुझे अपना ऑडियो भी चेक करना है कि मुझे तुम्हारी आवाज आ रही कि नहीं आ रही। तुम लोग टाइप क्यों कर Yes, रहे हो? sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. I don't know why you people are, just not listening to what the teacher says. So no questions from the previous class? Okay, so meanwhile people join, let's discuss a few things. As I mentioned in the WhatsApp group, that we will have a test on next Thursday, right? That is, I think it will be 2nd December, right? So the test will be of subjective in nature. Subjective in the sense that I will give you one program to write, and you will have to submit that program in an hour. ठीक है? Then after uh, uh, Thursday, the next coming week, that is by uh, you know, let me check the calendar. By December 6th or 7th, or maybe both days, we will have the Viva for you guys. Okay. So that will be a combined Viva for lab as well as whatever program that you have done. I will ask questions from that also. So that is one announcement. Anything you have to ask regarding test or Viva? No? Okay. So one more thing you will have to do is you will have to prepare a lab file. I will give you around 2 weeks. Aniket says, can you take Viva after 7th December? Uh, I'm not sure whether it will be possible to take it after 7th December. Probably the date that I am telling you is uh, 6 and 7%. जी मैम, अभी तक नहीं करा है मैंने, नहीं करा है। कुछ दिन और चाहिए होगा मुझे, थोड़ा सा कोई किसी। जस्ट मिनट गैस।
Okay, guys. Someone was saying that can we have the Viva after 7th? See, I cannot assure because there are certain deadlines that is communicated from the departments. So I cannot assure that we can prolong it, but if possible, I will try to extend date for a few days. ठीक है, चलेगा भाई? ओके सर। And it depend upon कि मतलब क्या एग्जामिनेशन की डेट आपकी आती है, क्योंकि एग्जामिनेशन भी आपका थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि जनवरी तक जाएगा, लेकिन एग्जाम आपका मेरे ख्याल से दिसंबर में जल्दी शुरू हो जाएगा। तो इस हिसाब से फिर अब डेट उसके हिसाब से करनी पड़ेगी, तो मैं बहुत श्योर नहीं हूँ उसके हिसाब से, लेकिन हाँ, अगर टाइम मिला तो मैं आपको टाइम देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं भी चाहूंगा कि आप अच्छा ही परफॉर्म करें। वरना फिर पर्पज ही नहीं है, ना तो मेरे पढ़ाने का पर्पज है, ना आपके पढ़ने का पर्पज है, ना मतलब एग्जाम लेने कंडक्ट करने का पर्पज है। एग्जाम कंडक्ट इसीलिए होता है कि प्रेशर में ही सही आदमी पढ़ ले, है ना। तो कोशिश ये रहेगी कि जितना आपको बैंडविड्थ में दे सकता हूँ आपको तैयारी के लिए। जो रिटर्न एग्जाम होगा, जो मैं कह रहा हूँ कि 2 दिसंबर को होगा, वो तो ऑफलाइन होगा, एक प्रोग्राम दूंगा उसमें। ठीक है, उसमें एक प्रोग्राम दूंगा, जो प्रोग्राम आपको करना होगा। और जो वाइवा होगा, तो वाइवा में समझ लीजिए कि एक तरह से 2 चीजें मैं चेक करूंगा। एक तो जनरल आपकी लैंग्वेज की एबिलिटी, कितना सीखा है आपने, जो अब तक लेक्चर्स हुए सारे तब तक के ओवरऑल। प्लस उसके अलावा ये देखूंगा कि जो आपने प्रोग्राम सबमिट किया है वो सच में किया है या चोरी उरी कर किया है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन पूछ लूंगा मैं। ठीक है, तो वो भी आपको देखना होगा। तो एक तो सेकंड को जो रिटन एग्जाम है उसमें सिर्फ एक प्रोग्राम दूंगा, 1 घंटे में करना होगा, उसको सबमिट करना होगा। वो आपका गूगल क्लासरूम में ही आप सबमिट करेंगे एज असाइनमेंट। फिर 6 या 7 को अभी वाइवा टेंटेटिवली रखा है, अगर पॉसिबल रहा तो मैं एक्सटेंड थोड़ा कर दूंगा, अगर पॉसिबल नहीं रहा तो मैं एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगा। मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता इस पर, डिपेंडिंग अपॉन क्या डेट आती है एग्जामिनेशन की। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपको एक लैब फाइल बनानी है। लैब फाइल के लिए तकरीबन समझ लीजिए कि 2 हफ्ते का टाइम आपको अभी से दे रहा हूँ मैं। अगर थोड़ा डिले भी होती है तो चलेगा, डिपेंड करता है कि वही एग्जाम के शेड्यूल पर डिपेंड करेगा। तो उसमें करना क्या है कि सिंपली मैंने जितने भी प्रोग्राम हर लेक्चर में आपको कराए हैं, आप पढ़ते जा रहे हैं, उनको ट्राई करते जाइए और उनकी एक फाइल बनाते जाइए इंडेक्स करके। ठीक है। अपने से भी कुछ आपने प्रोग्राम करे हैं तो वो भी आप उसमें ऐड कर लीजिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थीम पे होनी चाहिए, और जावा जावा के प्रोग्राम पे करें तो उसको भी ऐड कर सकते हैं आप इंडेक्स में उसके टॉपिक डाल के। ठीक है। तो फाइल जो होती है बेसिकली इट इज जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ प्रेजेंटिंग इट टू द एक्सटर्नल। Sorry, guys, I didn't realize that we have few people who have just now joined, and they do not understand, Hindi. So what I was saying is, just let me repeat. We have a test on 2nd December. That test will be for 1 hour, and there I will give you, in that test I will give you one program to attempt. So you will have to write that program and then you will have to submit it. ठीक है. I will allow you to submit that program on a paper sheet. You can write on a paper sheet. It's better if you can actually execute it and basically run it, and then you can convert to a PDF and submit. But still, I will allow you to write the program by hand. Then when we will have the Viva, that is on 6th or 7th, or maybe I can extend if the examination dates are extended. So that depends upon totally on what date the examination begins. So depending upon how much bandwidth I can give, as of now, assume 6 and 7. If possible, I will give you some more time. So in that Viva, I will check your program that you will submit. I will ask question on that, as well as the general, the complete syllabus, whatever is covered in the lecture video till the last class. Then about the syllabus, see, first 4 unit will be covered completely and thoroughly. The last unit we won't be able to cover that way.
I mean, the formal classes won't be behaving in that way. So that will be a kind of, I will give you some 15 or 20 pages from one of the book for important topics that you can go ahead. There will be possibly one question from that unit, not more than that. Okay, in the examination, and that too from the notes that I give you, or from the book chapter that I give you. So you will have to make sure that you go through it, and uh, that's it. That will be the final unit. This is how it will be covered. So we don't have the time to complete, because we had a lot of lectures, but the session kept on delaying, because you also couldn't make up that way what I was expecting, and your background is really weak. So once you are done with whatever is covered in the class, then it will be possible for you to understand the last unit, which is which is basically your AWT and Swing component, the graphical user interface design. Okay, guys. So shall we start the lecture for today? सर एग्जाम्स ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन? See, it seems that the exams are going to be online. Still, we don't have any instructions regarding it. So when the schedule will be out, when the schedule itself, it will be decided that whether the exams are going to be online or offline. But what I guess is it will be online. Anything else? No, sir. Okay. तो बेटा आपसे भी पढ़ना शुरू कर दो. अब तो वक्त ही खत्म हो गया पढ़ने का, लेकिन जितना बचा है उतना ही पढ़ो. ठीक है. और फायदा भी आपको तभी पहुंचाएगा जब आप सच में ढंग से पढ़ोगे उसको. एग्जाम पास कर लेना तो एक अलग सी बात है. Someone has raised hand. Mohammad Ibrahim Khan. Any questions, Ibrahim? Yogesh? Okay. Let's give another 2 minutes for people to join, otherwise they will keep on disturbing. Just 2 minutes, guys. Let them join. आप लोग को कोई डाउट वगैरह ऑफलाइन समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? सच बता रहे हो, झूठ बोल रहे हो? अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? शुभम. हाँ, तो आप तो पूछते हो कई बार. तो भाई मास्क वगैरह कहाँ है तुम लोग का? ये मत करो भाई. जितना लाइट लोगे ना, अप्रैल देखा है ना कैसा गुजरा था. चलो कोने बैठ जाओ उधर जाके. ठीक है. अब मेरी तो मजबूरी है, क्योंकि मुझे बोलना है तो मुझे हटाना पड़ रहा है. एटलीस्ट तुम लोग तो प्रिजर्व हो. ठीक है, आगे ध्यान रखना, लेके आना. ठीक है, ऐसे मत करना. आपके लिए भाई फायदे फायदे के लिए भाई. Okay, guys. So in the last class, we were discussing about exception handling. We have seen two exceptions. One was null pointer exception. The other was array index out of bound exception, string index out of bound exception. Sorry, right?
And I mean, we have caused the exceptions and we have seen how you will get the response. The program terminates, right? So that's it, what we call as exception, an abnormal condition, a situation in which a program stops execution, some error happens at the runtime. ठीक है? तो जैसे मैंने कल बोला था कि if you see the compiler error, that's not an exception. ठीक है? That's a compilation error. ठीक है? And the compiler tries to check to stop as much as possibility of having an exception that will happen at the runtime. ठीक है? But still there are situations when the exception will occur. That means some abnormal condition will happen, which are not the routine things, and then your program will terminate. Your program will stop the execution. So in the last class, the two exceptions that we have seen is null pointer exception and string index out of bound exception. And to create a null pointer exception, what we did is we left a reference variable unassigned. That means we didn't assign an object to a reference variable. And then we try to use that reference variable by calling a method on that reference variable, right? So we got the null pointer exception. Similarly, when it was a string variable, a string reference variable, on that, if we call it char@, that means we want to fetch a character at a particular index position. Like here I have given 7. So if this index position is more than the index available in the character sequence, that means character array, that will be internally stored by the string, that will start from 0. I will be at 0 position, M will be at first position, R will be at second position, A, and then, yeah. Screen is shared or not? Shared, right? Okay. So, for example, here the index position I have given is 7. The maximum allowed index position here, it should be not more than 4, 0 to 4. That is the fifth character N, right? So here in this case, we will get the string index out of bound exception. And we have seen the exceptions are nothing in Java. Exceptions are basically an object. They are object of a class. Like null pointer exception was, its fully qualified name was java.lang.null pointer exception, right? So it's in the java.lang package. The name of the class is null pointer exception. Similarly, java.lang.string index out of bound exception. So that is again another class. So whenever exception occurs, the problem is encapsulated, right? Or kind of boxed in inside an object along with the reasons, right? And then it is sort of given to the user or the developer to do something with it or figure out what has gone wrong. ठीक है? तो ये जो अभी आपने देखा कि भाई जो जावा के क्लासेस हैं और मैंने बोला व्हाट आई जस्ट सेड इज व्हाट हैपेंड Yeah. Okay. So this is typically how we have seen the string index out of bound exception. So this is the name of the class,
And when this exception occurs, so we say that this exception is thrown. This exception is thrown by the Java virtual machine, JVM, which is executing my program, right? So JVM is taking the control of my program. It has executed my main method, right? So it's saying exception in thread main, and then it's creating an object of this particular class and just thrown to the sort of, you can assume that from at the position exactly at the line number, test first exception, for example, line number 27. So this line has created the exception. So just assume for the understanding purpose that this particular position, an object is something which has popped up, right? So at this line, the exception will has occurred. So assume that an exception, an object has popped up that has got a lot of things inside it, a lot of information like the reasons and how can we deal it with it. Okay? Then we need to somehow utilize that object to figure out what alternative routine I can provide to make that problem go away. Okay? Or to solve that problem at the runtime. Okay? Clear? Just for example, let me assume that I am trying to access a particular file at my hard disk. Okay? My program is trying to access a file. Okay. Or a database for that matter. Okay? Because in real world, you are not going to access a physical file system, rather you will use the database for application. And that particular application server or the file system, that hard disk crashed, or that particular the database system, that particular node machine, that somehow crashed. Okay? Now at the runtime, this exception will be thrown that the database that you are trying to connect with is not being connected. There is some problem. Or the file system that you are trying to access, that file is not available for any reason. There could be multiple reasons, and the exception object will actually tell you the exact reason. What is the problem actually that has happened. ठीक है, जो मैंने कहा कि यहाँ पे एक समझ लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट पॉप हो गया आएगा जो किसी क्लास का होगा. Now looking at that, the nature of that object, that means what instance that object is having or what class, we will try to decide what alternative routine, alternative code block we can provide in advance while writing the code, so that when that problem occurs, that routine is entered. Okay? That routine is entered. And probably in our case, that routine could be access to a network device where a backup database is there, or a file system where the backup is routinely being taken care of. So we can assign a alternate path to access that file system. ठीक है? तो ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना? तो इसमें क्या हो रहा है कि we are providing alternative routine. ठीक है? This mechanism of handling the problem at the runtime by providing an alternative routine is typically called as exception handling. We are handling the exception. ठीक है? इसको एक बार इस पे समझते हैं. For example, we have written some code. These are the 2-3 lines of code we have written. ठीक है? Now, any of these lines may go wrong at the runtime, not at the compile time. Any of these lines may go wrong at the runtime. Like for example, here this line has gone wrong at the runtime. We are trying to access the character at index position 7 of the string Imran, which has only 5 characters. ठीक है? So we got the string out of bound exception. ठीक है? So this line has gone wrong. So I have also shown you that there may be multiple lines which may go wrong. ठीक है? ठीक है? So assume this part of the code, some 2-3 lines of the code are, or even a single line of code is there, that may go wrong. Okay? So how will I handle this situation while writing the code? That I am taking a assumption, I am assuming
that if these lines have certain nature that may fail, like example, if I am trying to access a file system, then there is a chance that the file system is not available, the file is corrupt, or the database is down. So I know there could be such situation. So I will say this particular code is something which is disruptive in nature. This may create problem. So this is problematic in nature, or this could be possibly problematic in nature. This could be, okay? Problematic. This could be problematic code. So what I will do is, I will put this code inside a block. Okay? And the name of that block is called as try block. So I'm going to try to run this code. ठीक है? आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह में पढ़ा होगा गार्डेड रीजन, पढ़ा है? So this region of code is guarded against any problem or the exceptions. Just a minute. Hello, GM sir. Please, sir. फर्स्ट ईयर का ठीक। अभी तो मैं क्लास में हूँ, अली भाई के पास ले लीजिए, अली भाई है मेरे साथ। सर अली भाई को दे दीजिए, मेरी क्लास देर तक चलेगी, उनको बोल दीजिए जरा बना, अली भाई को बोल दीजिए बना के भेजने के लिए, अली भाई को बोल दीजिए, अली सर को। हाँ हाँ हाँ। तो सर फिर मैं अभी क्लास में हूँ, मैं नहीं नहीं सुनिए, मेरी बात सुनिए, ऐसा करिए। तो ये, अरे सुनिए तो, अरे सुन तो लीजिए, नहीं तो बात सुनिए। अली भाई के पास रखी हुई है फाइल सारी, मतलब अली भाई रूम पे हैं। हेलो, जस्ट मिनट गाइस। Yeah guys, you know, because of online we also have good amount of engagement, sometimes verification, sometimes admissions, everything has to be done online, so we get, you know, disturbed. Yeah, so what we were discussing is, so this particular code which is possibly could create a problem at the runtime, this is what we call as a महीने लगातार खाया बाहर का, guarded region, right? And फर्स्ट ईयर की बात नहीं कर रहा, अभी ये जो आफ्टर लॉकडाउन की। बेटा जरा साइलेंट कर लो जिसका माइक्रोफोन ऑन है। We put this code into a guarded region, and this guarded region is called as a try block. ठीक है, so we are going to try to run this code. ठीक है, and if any problem occurs, then we have to provide alternative routine. Like I said, if the file system is down, then we will have to provide a network file system location, right? So that will be done in another block which is called as a cache block. There is a cache block. Okay. So there is a cache block, and this cache block is very much like writing a method signature.
वही मैं बोल रहा था शहदुर, इसको। शहदुर आपका माइक ऑन है, जल्दी ऑफ करो। बता दिया पर हाँ ये थोड़ा डिस्टेंस में रखने ठीक है, दिस वेरी मच लुक्स लाइक अ मेथड डिक्लेरेशन। जैसे मेथड में आप करते हैं ना, यू डिक्लेयर द नेम ऑफ द मेथड एंड देन सम within parentheses for what are the parameters. So here I will say, for example, null pointer exception, the name of the class, which is actually describing me the type of problem exception. But here whatever line will have the error, that I said you that you assume that exception object has popped up, right? So this is the class declaration, and then we will have an object, say for example e, with the variable e or ex or whatever name you want to give. Okay, then you close the bracket. Okay, so this is the guarded region. If this line has failed and failed because of the null pointer exception, for example, then assume an object has been thrown by the JVM at this line. The third line is not going to execute then. This the problem has occurred in the second line, for example, then third line is not going to be executed. The rest of the code will not execute. The control will come to check for the catch block. If this catch block matches with the nature of the exception that has occurred, the object that has been popped up from here. If this is the same type of object, that is the instance of the null pointer exception, then it will enter in this block. And I can do whatever I like here. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर नल पॉइंटर एक्सेप्शन की ही हम बात करें तो क्या हुआ, जैसे मान लो हमारे पास एक let me just write down the code. This is going to cause the null pointer exception, right? Let's see. ठीक, null pointer exception आ गया. str is not pointing to a real object, so we have not assigned a real object, so it's just pointing to null. So we are getting the null pointer exception because we are trying to invoke a method on something which is not an object. It's null, and that method is current, right? So no question of out of bound here. It's the first reason that has come is that there is no object at all, right? So here, let me say that this line is going to create the problem for me. Now what I can do is I can write this code in the guarded region that is within a try block. Okay, and then I will write H block and here what I will write is exception ex, for example. Okay. Okay. Now, if the nature of the problem is null pointer exception, so the control will come here. And this is the block where we are going to give alternative routine. So because str was not initialized, let's say we are going to initialize str1. str1 is equal to, now let me say Shah Imran. It's Shah, okay? Okay, we have initialized it. Now we are going to repeat the same process over here. Okay, let me say as of now it is P, just for the sake of that it just executes for the correction sake. Okay. str1 cannot be restricted. Okay. Guys, ठीक है? So let me show in the debug mode. You will understand how the code goes. Let me put a debug point here, toggle breakpoint. ठीक है?
अब इसके बाद मैं कोड को रन कर रहा हूँ. लेट मी रन इट इन डिबग मोड. सोर्स सॉरी run as or debug as java application. The control will come here and stop. ठीक है, आप एक एक लाइन बाय लाइन करके देख सकते हैं क्या हो रहा है. ठीक है, the control will come at the this particular point, debug point. ठीक है, देखो कहाँ चला गया ये. local lost. Just hold on. क्लास क्यों खोल रहा है. There is some problem with the class loader. एक बार रिस्टार्ट करता हूँ मैं क्लिप्स को. सर रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर लिएगा. ओके. कोई भी तो नहीं है बेटा. ओके. Let's try. Yeah, ठीक है. I don't know why it is going to the class loader, but I just pressed F7 and it has, quit from the class loader. So, see, we have come to the first line, right? Which is in the try block. देखो, अगर
फिर से रिपीट करना है तो बताओ, रिपीट कर दूं? थोड़ा सा मेस्ड अप हो गया लेक्चर आज का, फिर से करूं? देखो समझो पहली बात को फिर से। See, assume these 2-3 lines of code are there, right? These lines of code may create some problem at the runtime when they are executing. ठीक है? तो ये कोड जो हमारा है, ये कोड क्या है? प्रॉब्लमेटिक कोड है, राइट? This code is problematic code. Now what we are going to do is we have to handle the exception. That means we have to handle the error that will come at the runtime. ठीक है? So what we are going to do is we are going to put this block, this portion of the code in the try block. ठीक है? एक try लिखेंगे और एक curly braces से open करेंगे, curly braces से end करेंगे. So that becomes a block of code. So this is what we call as a guarded region. We are guarding this region against any possibility of occurrence of exception. ठीक है? Now when an exception occurs, say for example, this is line number 1, this is line number 2, this is line number 3. Line number 1 executed successfully, its output will be visible on the screen, or whatever the computation it has done, that computation will be done. ठीक है? Line number 2, suppose here we get the null pointer exception. We try to assess a reference variable which is pointing to null actually, right? So here we will get a null pointer exception. Line number 3 is not going to execute now, because the code has stopped. There is a problem, abnormal behavior has happened. Okay? Now the control will come, and here at line number 2, I told you that you assume that an object of the type of the class that is encapsulating the problem, that object has popped up over here at line number 2. ठीक है? तो अगर null pointer exception आया था तो उसका एक object यहाँ बन के आ गया. So it will come to the cache block. There could be multiple cache blocks for each and every type of exception, each and every type of problems that may occur. So this is, for example, is the first cache block. So just after the curly bracket ends, I have written cache in small letters. It's a keyword. Then I have given the name null pointer exception, the name of the class. Okay? Like student S, string str, int x. Similarly, ex is of the type of null pointer exception. So when this cache block is seen, the JVM sees that there is an object that we have received over here of the type null pointer exception. That means an alternative routine to fix the problem or to correct the problem is written within this block. From here, curly braces will start from here and here. And here some lines of code you have written to correct that problem. Okay? So this is the guarded region. This is the handler. Clear है? समझाई बात? So now, if we look at the code, the same situation I have, replicated over here. We have got this particular line where I am trying to assess a particular character of a string reference variable, which is null, which is by default and holding a null value. It's not pointing to a real object. So I am going to get a null pointer exception for sure. So if an object of the null pointer exception is popped up at line number 28, for the assumption, for the understanding purpose, I'm saying, then the control will come out of this block, even if there is another line here, some other code. So that code will not be executed. Let me in fact write some code, like for example, I want to print something, system.out.println after exception. So if this line is reached, then after exception should be printed, right? But this line will not be reached because exception will occur here. And the control will jump from here to the first cache block. And we'll see the object was of the type null pointer exception, and the cache block also contain a reference to the object of null pointer exception. So it will assume that an alternative code which is going to fix the problem of this null pointer exception will be written from this curly braces to this curly braces. Okay? And what is the code we have written? Because str was not pointing to any
value, so we have actually given it a value, an object. Either this way, or we can also say new string and a double quote. Both ways are correct. That was the shorthand, right? But a real object will be created, and that will be assigned to str1. Now, if I repeat this line again, which was in the try block, it will be successfully executing. Okay? And let me type something here, system.out.println from the H block. Okay? I have executed this program in the debug mode. So debug mode, as you know, we have seen several times. It will execute the program line by line, and you will be able to monitor what goes inside the variable, what is being printed after a particular statement execute. Okay? Where the control goes to understand. Okay? So this is the first line. It is still not executed, the green one. Okay? Line number 28. If I say fn plus f6, this line must execute. Something is happening with my system. Okay. सीधे निकल गया बाहर. कुछ तो गड़बड़ हो रहा है. अच्छा, इसको रन करके एक बार देखते हैं डायरेक्टली. ठीक है, डिबग से बाहर निकलते हैं, रन करके देखते हैं. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग. वो समझना पड़ेगा मुझे बैठ के आराम से. लेट्स सी, एक बार रन करके देखते हैं. ठीक है, सीधे रन ही करते हैं. रन एज जावा एप्लीकेशन. देखो अभी क्या हुआ है. अब जैसे मैं सीक्वेंस मैं आपको बता रहा हूं, इट हैज कम टू लाइन नंबर 28. ठीक है, देन एट लाइन नंबर 28 it has thrown a null pointer exception. This statement will not execute. That means this message will not be printed. क्योंकि अगर exception आ गया है तो उसके बाद की line print नहीं होगी guarded region के अंदर. ठीक है, so this line will not be printed. The control will come to this cache block which has got a variable of null pointer exception because null pointer exception has occurred in line number 28. So both are matched. ठीक है, यहाँ से इसको मिला null pointer exception और उसने देखा कि कैश ब्लॉक में null pointer exception है, तो उस कंट्रोल में चला गया, वो इस ब्लॉक के अंदर आ गया, यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, अब इसको मैंने क्या किया, व्हाट आई हैव गिवन इज आई हैव गिवन हिम दिस str1 real string sheh. Then I am repeating the statement at line number 28 again here in line number 32 now. So at char 3, what is the character in this string? So it is 0, 1, 2, 3. It is H. So that H is printed because of system.out.println. That H is printed. And then system.out.println, next line from the cache block, that line is printed. बात समझ में आई? अगर प्रॉब्लम हुई है तो प्रॉब्लम को मैच किया जाएगा कैश ब्लॉक में कि किस नेचर की प्रॉब्लम है, और अगर नेचर की प्रॉब्लम के लिए कैश ब्लॉक अवेलेबल है तो उस कैश ब्लॉक में एंटर कर जाएगा ताकि अल्टरनेटिव रूटीन आपकी रन कर जाए. ठीक है, now the program is not terminated abruptly. You didn't see that that exception red lines regarding the exception that this particular exception has been thrown. That is called as stack trace. Trace of stack. Stack क्या होता है? First in last out. तो उसमें जो एरर्स आती हैं वो देखिएगा लास्ट जो करंट लाइन है वहां से शुरू होगी और ऊपर तक आएगी. ठीक है, so that is why it is called as stack trace. ठीक है, so you are not seeing that stack trace in red color because the program has not terminated abruptly. ठीक है, अगर ये कैश ब्लॉक और ट्राई कैश ब्लॉक नहीं होता तो क्या होता? It would have been shown the exception that is stack trace. ठीक है, terminated abruptly. क्लियर हो रही बात? Now, as said, in Java, an exception is always an object. It's an object of a class. So EX reference variable is going to point an object of the type null pointer exception which has been popped up at this line. Clear? What is the difference then
in C++ versus Java? Not C, C++. C में तो एक्सेप्शन हैंडलिंग है ही नहीं. C भी हाई लेवल ही बेटा. नहीं मैं कह रहा हूँ एक्सेप्शन हैंडलिंग के मैकेनिज्म में C++ में भी एक्सेप्शन हैंडलिंग था ना. पता है कि नहीं है? C में नहीं होता है, C++ में होता है. ठीक है, C++ में वो सारी चीजें मिलेंगी जो आपको जावा में मिलती हैं. ठीक है. Yes, in a different way sometime, but you will get everything. Whatever is in Java, you will get in C++ also. ठीक है, same in C Sharp. ठीक है. ठीक है. C Sharp is again from Microsoft, right? So there is also exception mechanism, similar kind of thing in C++, not in C, right? But there, not just object, you can use even integer or different other primitive type as exception. ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हैं ना, ex of the type null pointer exception, वहां पे आप -1 2 कैरेक्टर कोई कैरेक्टर लिख दो, उसको भी आप कैच कर सकते हो एज एक्सेप्शन. So Java has restricted this. Java has reduced a lot of confusion. ठीक है. So here, if you are talking about an exception, the exception must capture a lot of information, and that possibly could only be captured in an object. So it is kept that if I'm talking about exceptions in Java, that's an object of a class, not any primitive type. In C++, it could have been a primitive type also. ठीक है, वहां possible था. In C, there is no question of exception. अगर यही सिचुएशन अगर आपको C में हैंडल करनी होती तो आप कैसे करते? If I want to handle the same situation in C language, which is a procedural language, not an object-oriented programming language, right? क्या करना पड़ता बताओ? We don't have the try catch block, right? Instead, what we could have done? Tell me. Let me remove this try and catch block. These are the two lines that we want to execute, which were in try block. So what I will do is, if object.str1 is not equal to null, ठीक है, यहां से मैं इस ब्लॉक शुरू करूं, यहां तक खत्म करूं, else यहां से शुरू करूं, defensive way of handling the problem or the error which may occur at the runtime. But of course, we do not have an object which we can check for null. We can check for primitive values. There will be integer values that we can check whether it's not equal to 0. If, for example, you have application where an applicant, if his age is less than 21, he cannot apply to a particular course. Okay? He could not apply to a particular course. So that's an exception which has to be coded in the business logic of the application, right? So in that case, you will check age must not be less than equal to 21. Else, you will give an error message that this candidate is not eligible for admission to this particular course. बात समझ में आ गई? वहां ऑब्जेक्ट नहीं है, of course. ठीक है, इतना डिफरेंस है. क्लियर है? People online, are you able to understand? Guys, yes, no? Yes, sir. Okay. अमन सेक्शन ए से हो ना? Yes, sir. Section A. Okay. Okay. ठीक है. So this whole mechanism as such is called as exception handling. We are trying to handle exception that may occur at the runtime. ठीक है.
Now, I have created a few already pre-written code to help you understand, because typing the whole thing is going to take a lot of time. We have got very less time to finish the syllabus. ठीक है? तो मैंने कुछ कोड यहाँ लिख रखा है. नल पॉइंटर मैंने आपको दिखा दिया था कल ही लिख करके. करेक्ट. This is a string index out of bound exception. You will get here. No, null pointer exception dot, right? S is equal to null, right? So you will get null pointer exception. Then let's see. Okay, see this code. Tell me what this code is doing. Read it and tell me. दो बार क्यों कर रहा हूँ? I'm creating an object of a scanner because I want to read something from the keyboard. We are passing system.in because system is a class. What is in? Okay, system से input ले रहे हैं. But what is in? इन मतलब इनपुट आप समझे नहीं मेरी बात. मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ? System is a class. What is in? It's a variable, it's a method, or what? Method. Method. नहीं बेटा. Method होता तो क्या होता है इसके साथ? Println जो आप लिखते हैं ना, system.out.println. तो println is the method. किस चीज को हम क्लास के नाम के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? What is that we can refer along with the name of the class with the dot operator? Static variables and method, right? We can directly use with the name of the class. ठीक है? This is not a method, so it must be a variable. Let's go inside the class and see. System is the name of the class. In is what? It's a variable. It's a variable of the type input stream. It's declared final so that you should not change the definition of the input stream, because you are not knowing what the input stream is and how you have to get the input stream, because it must be getting from the operating system. Operating system is controlling your keyboard. ठीक है? तो final भी declared है. Static है, that's why you call it system.in. Directly आपने access कर लिया. Public है, that's why there was a visibility. ठीक है? That's why you in a separate class you were able to access system.in. बात समझ में आ रही है? So this is an object of input type input stream class declared within the system class, and if you go to this particular class, there you will find the different methods. ठीक है? Just like system.out.println. So there you will get output stream. Out is of the type output stream. And within the class output stream, you will see print method and println method, all those methods. Clear हो रही बात? Syntax जिस तरह हम लिखते हैं system.in.this, system.out.this, system.err for error. The three corresponding implicit variables that you get in C++. Cout, Cin, and cerr. ये मिलता है ना आपको? Cout for printing anything, Cin for reading anything, cerr for printing something in red line, red color. That's an indication of an error. That's the only difference. We can do all these things here also, but along with the class system, because they are the part of the system class. Static variables of different types. ठीक है? बात क्लियर है? वहां भी आपको ऑब्जेक्ट बनाया मिलता था. आपने जो फाइल्स इंक्लूड की है उनके अंदर बाय डिफॉल्ट वो आपको बनाया ऑब्जेक्ट मिलता था. There are also cout and cin and cerr are the object itself. They are the object itself. ठीक है? It's a different method that you have different ways of accessing the object. There, in a typical old-fashioned, C++ code, you will use a
dash and with a greater than arrow key symbol, right? Along with the reference variable name instead of dot operator. With the C11 specification, you can use the dot operator. That means the newer specification for C++. ठीक है, तो वहां भी सिंटेक्स दोनों ही तरह से काम करता है. ठीक है. Anyways, coming back, yeah, tell me now. We are creating the object of a scanner class to read from the keyboard. Integer a is equal to 0, b is equal to 0, result is equal to 0. सब 0 है अभी. ठीक है. A message will be printed. Enter two numbers to prompt you to enter two numbers from the keyboard. The first number that you enter will be of the type integer. So I am calling nextInt method of the scanner class object, which is scan, and that will be stored in the variable a, which is initially having 0 value. Now whatever number you enter, say 5, that 5 will be assigned to a, correct? Then that number will be printed. You entered 5, for example. Similarly, scan.nextInteger, you are reading the second integer because you have given the message enter two numbers. So you are entering second number. That number will be stored in b variable, and that number is also being printed over here. ठीक है, क्लियर है? अब उसके बाद आप क्या कर रहे हो? यू आर डूइंग कंप्यूटेशन. a is equal to a plus 3. 5 अगर एंटर करा तो 5 plus 3 8 हो गया. ठीक है. System.println a is equal to the new value after the computation that you have printed. Now result is equal to a by b. Under normal situation, this code will run. ठीक है. a मान लीजिए 8 हो गया, b आपका 2 था, तो 8 by 2 it will be 4, and that 4 will be stored in the result, and then you are going to print the result here. Final result is equal to this. ठीक है. Otherwise, what will happen if there is any problem in this line number 28? Then the control will come to this catch statement, and the code or the routine of the catch statement will be executed. ठीक है. And then this line number 34 and 36 will be executed. आ रही बात समझ में? एक बार रन करके देखें. So it is saying me enter two numbers. ठीक है. Let me enter first number, say 8. ठीक है. You entered 8. I have to enter another number, right? I have entered 2. ठीक है. You enter 2. A is equal to a plus 3. 8 plus 3 is 11. Final result was what? A by b. Yani 11 by 2, right? Now 11 by 2 is 5.5. So because these are the integer division, so that will be rounded off to the integer value, and then 5 is being assigned to the result instead of 5.5. ठीक है भाई. a और b दोनों इंटीजर था ना, रिजल्ट भले फ्लोट है, लेकिन a और b में जो कंप्यूटेशन हो रहा है वो कंप्यूटेशन इंटीजर में हो रहा है ना. तो अगर कोई वैल्यू अगर फ्लोटिंग पॉइंट है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर में. That's why it has been converted to integer value, right? Because a and b are integer. So 5 instead of 5.5, 5.0 will be assigned to the result, and the result is printed. Then the line after exception handle, that is printed. This particular line. यूज कर लो, आपकी मर्जी. फ्लोट कर देता हूँ इसको. ठीक है. फ्लोट रिजल्ट फ्लोट नहीं आएगा. यहाँ पे नेक्स्ट इन की जगह पर क्या यूज करना पड़ेगा? नेक्स्ट फ्लोट. ठीक है. यहाँ भी नेक्स्ट फ्लोट चला के देख ले एक बार. ठीक है. Enter two numbers. Let me say first number is 8.6. Second number is 5.4. उससे कंप्यूटेशन क्या हो रहा है? 8.6 plus 3 11.6. 11.6 by 5.4 2.14. सही है. उसके बाद after the exception handle, यानी after the catch block, whatever
the message that you are printing, that message is printed. ठीक है, अब इसको हम दोबारा चलाते हैं. Under normal conditions, the program doesn't show any error or any exceptions. ठीक है, दोबारा से रन करते हैं. Enter two numbers. First number, let me say 8. That means 8.0. It will be converted to 8.0. Second number. The second number I am entering 0. क्या होता है अगर किसी नंबर को 0 से डिवाइड करो तो टिपिकली इसको कहते हैं कि आप डिवाइड नहीं कर सकते 0 से, है ना. तो दैट्स अ डिवाइड बाय 0. हाँ, क्या रिजल्ट आया है? इंफिनिटी. एक मिनट. रिजल्ट Eleven फाइनल रिजल्ट हैंडल किया कि नहीं किया मैंने इसमें? मैं कोड में चला के देखा नहीं है, पहले लिखा था काफी. रिजल्ट इज इक्वल टू ए बाई बी हुआ, है ना. या क्या हुआ आपका 11 हुआ, 11/0. तो ये आया होगा, ये तो इंफिनिटी हो गया, ठीक है, पर इसको आना चाहिए था इसके अंदर डिवाइड बाई 0 एरर. अच्छा, एक्सेप्शन गड़बड़ है क्या? एक मिनट चल गया, देखते हैं. When you use different versions of Java every time, so there will be some surprises. तो लास्ट टाइम से अब की बार कुछ चेंजेस देख रहा हूँ मैं, मतलब पिछला जेडीके का जो वर्जन था उससे अभी कुछ मैं चेंजेस देख रहा हूँ. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू सॉर्ट आउट व्हाट इज द डिफरेंस इन द टू नंबर्स. ओके, सो लेट मी से फर्स्ट नंबर इज 8. ये उसमें डिबग पे गया नहीं क्या? क्या प्रॉब्लम कर रहा है मेरा लैप? ओके, 8 into 8. ओके, 0. ठीक है. ओके, FN प्लस F6. ठीक है, A इज इक्वल टू 11 आया, ट्राई ब्लॉक में आए हम, राइट. ठीक है, यहाँ तक सही है. ट्राई ब्लॉक पे आ गए हम. FN प्लस F6. अब देखो कंट्रोल कहाँ जा रहा है? कैश में जा रहा है, राइट. कैश में आने के बाद इधर हमारे वेरिएबल्स दिख रहे होंगे. देखते हैं क्या हो रहा है. B 0 है, A आपका 11 है. FN प्लस F6. ओ, यानी जो एक्सेप्शन टाइप आ रहा है, देखो इससे बाहर आ गया. इस रूटीन को इसने हैंडल नहीं करा, यानी एक्सेप्शन टाइप जो आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है ना. डिबग से समझ में आया क्योंकि इसके अंदर रूटीन के अंदर से एंटर नहीं किया. नाउ वी वांट टू चेक व्हाट इज द काइंड ऑफ एक्सेप्शन. ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, जरा सा इसको पहले ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन के अंडर में ही आता था. ये यूज्ड टू बी अंडर द अरिथमेटिक एक्सेप्शन. ठीक है, तो अब ये इन्होंने लगता है कोई नया एक्सेप्शन ऐड किया है, इसमें ये चेंज हो गया है. ठीक है, इसको जानने दो अभी, और पता चल जाएगा. सरप्राइजेस फीचर को मिलता रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है पहले जेडीके कोई और वर्जन में यूज कर रहा था, अब कोई और यूज कर रहा हूँ, उन्होंने कुछ चेंजेस कर दिए हैं, तो अब मुझे ये चीज फिर आउट करनी पड़ेगी. लेट मी रन इट. 8 2
सॉरी, जीरो करना था ना, दिमाग ऐसे ही काम नहीं कर रहा है। एक्सेप्शन दे ही नहीं रहा है, फाइनल रिजल्ट 20 कर दे रहा है, इन्होंने हटा ही दिया उसको। अर्लियर पहले एक्सेप्शन होता था, ये किस वर्जन तक था वो नहीं पता मुझे। तो मतलब इन्होंने क्या किया, नॉर्मली होता क्या था कि इसमें ये एक्सेप्शन देते थे, ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन देते थे कि डिवाइड बाय जीरो एरर लिख करके आता था वो कॉज, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि भाई, तो ये अच्छा काम किया, बल्कि कि अच्छा काम किया कि भाई ये प्रॉब्लम आपको हैंडल ही नहीं करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कह दिया कि भाई इसका आंसर इन्फिनिटी ही होता है, तो हम इन्फिनिटी ही प्रिंट कर देते हैं, क्यों आपको हम प्रॉब्लम शो करें, ठीक है। तो लेट मी ब्रीफ इट अगेन। अर्लियर व्हाट it used to happen is, in the earlier versions of JDK that I have executed, run basically, it used to be an arithmetic exception, and the cause of the arithmetic exception was slash. It slash is printed, that is divide symbol, by zero error. That was the cause, ठीक है। And then you get into this routine which is inside the catch block, and that should provide the alternative path. लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि they have removed this kind of exception itself. They have provided a better kind of message that it's an infinity, ठीक है। ओके, पर कोई तो सॉल्यूशन होना चाहिए इसका। अगर मैं चाहता हूँ should not be infinity, so infinity is something which is they have introduced something like maybe null something, I don't know, ठीक है। तो कुछ तो सॉल्यूशन होना चाहिए। हाँ, मतलब I don't want to keep it infinity, I want to कैसे चेक करेंगे नल को? तो नल की वर्ड से चेक करते हैं ना, इन्फिनिटी अभी आ रहा है तो कैसे चेक करेंगे? दिस इज न्यू फॉर मी आल्सो, पहली बार देखा है मैंने इसको भी। हाँ, बी जीरो नहीं होना चाहिए, बट दैट्स अ पोस्टल वे, राइट। मैं कह रहा हूँ कि बी जीरो हो गया, ठीक है, बी जीरो हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं, हम उस बी की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं किसी पॉजिटिव वैल्यू में। वो उस तरह से कर सकते हैं, पोस्टल वे से तो हमेशा कर सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे से करना है अगर कुछ, तो कोई तरीका तो होना चाहिए ना। अगर इन्होंने एक चीज को हटाया है तो कुछ तो रिप्लेस करा होगा, तो वी विल हैव टू फाइंड इट आउट, ठीक है। आप भी फाइंड आउट करोगे, मैं भी फाइंड आउट करूंगा, ठीक है, कि जो इन्फिनिटी प्रिंट होकर के आ रहा है, अगर इसको हम नहीं चाहते हैं तो क्या करना चाहिए हमको। भाई एरर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मुझे नहीं पता। अगर एरर नहीं हो रहा है, एक्सेप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हैंडल करने का मैग्नेट तो खत्म हो गया। मैं उसको हैंडल करता था, किसी अपने हिसाब से वैल्यू को असाइन करता। अब वो वैल्यू असाइन करने के लिए मेरे पास जो रिजॉर्ट करने का तरीका है वो इफ एल्स के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या इफ एल्स के अलावा कोई और तरीका प्रोवाइड किया है जावा ने नए अपने वर्जन में? ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये तो भाई बड़ा अच्छा प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एकदम नई चीज है। तो जो इसको फाइंड आउट करेगा उसको 2 असाइनमेंट का क्रेडिट मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए ना? अगर कोई फाइंड आउट करके सही बताता है और चला के दिखाता है चीज की ऐसा हो सकता है पॉसिबल, या नहीं हो सकता है, अगर तो नहीं हो सकता है, वट एवर इज द रिजोल्यूशन, दिस इज समथिंग न्यू दैट आई हैव ऑब्जर्व्ड टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। नॉर्मली एज एप्लीकेशन डेवलपर आई नेवर राइट अ कोड फॉर डिवाइडिंग समथिंग बाय जीरो, ठीक है। अपने पूरे करियर में नहीं कोड लिखा होगा, ये तो डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए कोड होता है ना, क्योंकि आपको दिखा रहा हूं मैं। बट इट्स स्टिल आई एम यूज्ड टू सी एन एक्सेप्शन and I have always handled it. But they have changed the way. If they have changed the way, what is the alternative in the object-oriented way? Or if there is an alternative or not? This is the question. ठीक है। देखो, अगर ट्राई कैच होता तो ट्राई में मैं उसको डालता कोड को, और कैच में वो मुझे अर्थमेटिक एक्सेप्शन देता। कैच को स्किप कर दे रहा था ना, नहीं आ रहा था। तो अगर पहले वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन में था ना, अगर हाँ सही,
अगर उन्होंने एक्सेप्शन मूव कर दिया है किसी और उसमें, किसी और नाम से, तो वो भी तो फाइंड आउट करना होगा। दैट इज अगेन रेजोल्यूशन। ठीक है, किया क्या है इन्होंने, ये फाइंड आउट करना है हमको। जेडीके जावा वालों ने क्या करा, क्या है। और अब तो जावा क्या सब नहीं, अब तो ओरेकल है ना। ओरेकल वालों ने क्या उसमें कहानी बनाई है, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, द इंटरेस्टिंग केस ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक है, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं भी देखूंगा, और अगर आप लोग करके देंगे तो बहुत अच्छी बात है भाई। ठीक है, स्टूडेंट ही करके देगा टीचर को, तो इससे अच्छी बात तो क्या हो सकती है। ठीक है guys, so ultimately what I was trying to show you, because it's a code that I have written probably a year back, so I was just trying to reuse so that I should not be forced to code such a long code to save time. But unfortunately things have changed in JDK itself. So this is something what I was trying to demonstrate will not be possible, but however we will try to find out the alternative for it. ठीक है, and that is something that you, if you do, you will get a very good credit for it. ठीक है, ये जो मैं बातें कहता हूँ ना कि दूंगा, तो जो करके मुझे देगा सच में, उसको सच में एग्जाम में डिफरेंस पता चल जाएगा मार्क्स में। कहीं भी यदि कोई वीकनेस होगी तो वीकनेस सॉर्ट आउट हो जाएगी, ये पक्की बात है। थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका डिफरेंट है मेरा, एकदम टिपिकल तरीका नहीं है कि जो कॉपी में आप लिख के आ रहे हो बस वही चीज ना, आप कर रहे हो तो उसका भी इवोल्यूशन चीज में होगा। ठीक है, सर दोबारा रिपीट कर दीजिए, सुनाई नहीं दिया। ऑनलाइन के साथ तो बड़ा मसला है, क्या कहें। चलो रिपीट कर देता हूं मैं। ठीक है, लम्हा व्हाट आई एम सेइंग इज, सी अर्लियर in this situation, whatever I try to demonstrate, when I try to divide something by 0, there was an exception that was occurring, and the exception is arithmetic exception. ठीक है, so under the catch block I have written the arithmetic exception code. Let me just undo the code and you will see. देखो कोड मैंने arithmetic exception का कोड लिख रखा है, राइट। ठीक है, so it used to be arithmetic exception, and this routine is something that is supposed to run in that case. ठीक है, but now what they have done is, it's no more an arithmetic exception, so this catch block is never reached. We have debugged and we have seen that this catch block is skipped, and instead they are printing the final result as a string infinity. Now the question is, as Shubham, right, Shubham said we could have sorted this using the procedural way that we check if b is equal to 0, then in that case we can prompt a message that re-enter the b. ठीक है, or we can assign b to some value, ये कर सकते थे, but we want to do it by the object oriented way. ठीक है, so do we have any other exception which is going to capture it? What is the meaning of this infinity? Is it a keyword? Doesn't look like a keyword because it's coming in I don't know, infinity type अगर मैं करूं, वेक्टर से था ना आई, कि ये ग्रे आउट नहीं हो रहा है, कीवर्ड तो नहीं है ये। ठीक है, तो ये है क्या चीज आखिर, ये क्या है और उसको हैंडल कैसे करना है हमें, दैट इज द क्वेश्चन। एनी अल्टरनेटिव दे हैव प्रोवाइडेड द जावा पीपल और नॉट, सो दैट इज द क्वेश्चन। ओके, ओके सर। ओके सर। अगर किसी को समझ में अभी भी नहीं आया है तो आई विल मेक शुभम एज अ नोडल पॉइंट, सेक्शन बी, शुभम फ्रॉम सेक्शन बी। आप अगर कोई आपसे डिस्कस करेगा तो आप हेल्प करेंगे, ठीक है, यू हैव टू प्रॉमिस दैट। ठीक है, तो शुभम को आप मैसेज कर सकते हैं अगर डिस्कस करना है, प्रॉब्लम क्या है अगर समझ में नहीं आई है, मे बी ही कैन एक्सप्लेन इन अ बेटर वे। ठीक है, आसान अल्फाज में शायद समझा दे, तो इत्मीनान से डिस्कस करके सभी के पास अपॉर्चुनिटी है और इसका रिजोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी तक का मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा हो गया नहीं आज के लिए, so we should stop it. I am stopping the recording first.